Now, Vapnik wanted to use geometry in some way so that classification problems could be handled. So he came up with the unique idea of support vector machines. As we will see, it is based upon geometry. You have got these scalars, vectors, products, dot product वैसे करेंगे हम, so on and so forth of vectors. Vector में जो important चीज है, that is the magnitude and the direction. So this is the vector from geometry. We have been using your favorite mx plus b equation, and the result of this can either be linear regression. अगर इस पे logistic function लग जाएगा, it will become the logistic regression. If you have multiple such things, you can have the neural network, so on and so forth. The idea is that there is only one coefficient here, and we discussed that if x is just one feature, if you have more features, multiple features, you have x1, x2, all the way till xn, then you will have the m1, m2 until mn, and then you will add the bias term. So here we can say that these small x1, x2, xn, these are the feature vectors. Keep one thing in mind, up till now we have been using the word feature vector to describe a column or array. Whereas in geometry, vectors have magnitude as well as these have definite directions. Arrow होता है इसके आगे, तीर का निशान, which tells you which direction is it pointing to. So feature vectors हमने पढ़े थे, but this is something that I wanted to clarify. So we have been using this, and in the vector form, you have used it like this. X is the feature vector multiplied with m, which is the weight. इसका transpose करेंगे so that you get one answer, plus b. So if we look at this equation, it is the vector form, but we are using only feature vectors. We are not actually doing the vectors of geometry. So we have this thing, we can get the results of linear regression, logistic, ANN, CNN, all of them are somehow based on these. Another important thing is that in SVM, Vapnik suggested that for binary classification, we use the labels -1 and 1 instead of the 0, 1 or yes, no that we have been using in other algorithms. For SVM, it is important that we should use -1 or 1. ये आपकी बन जाएगी class 1, let's say class 0, and this will become class 1. Why is it necessary? Because we shall see that the negative samples will have to be arranged in a manner so that their answers are always in minus, and the positive samples
will have to be multiplied with positive 1 so that they remain on the positive side. Now, just to make this point clear, I'm going to paste a photo. I think you have seen this before. If not, then it's okay. All right, so now the idea of this picture, color the change, why does it select it? Okay, the idea of this picture is that these are data points. The red data points belong to one class, the green data points belong to another class, and the decision boundary in between these two. Now, decision boundary is going to be a modification of this mx plus b. हम देखेंगे mx plus b used to give you a straight line. However, in case of support vector machines, the boundary will split the data set so that something is on one side of the boundary, other things are on the other side of the boundary. So in this particular image, if we consider this to be the boundary, then we can say the red samples are on top of this, whereas the green samples are below this boundary. Up till now, we have been using very simple classifiers, and we were mostly dealing with rectangles and circles. But here, the boundary can have different shapes. Important thing is, if we have a line that separates one set of points from the others. I'm just getting some images from the internet क्योंकि ये otherwise जो है ना draw करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. So let me get this image copied and let's paste here. Okay, now this is another interesting image. We have the green dots and the blue dots, and on top of that you will see a line which has green on one side, blue on the other side. So as researchers, you can always say that blue are the positive, green are the negative samples. एक जो है वो लाइन के इस तरफ है, दूसरे लाइन के इस तरफ है. The interesting thing is that this line is not simply called a line. Line का जो नाम support vector machine रखता है, that is called a hyperplane. The plane
आपको पता है इज लाइक ए सरफेस. यहाँ दिस डायग्राम is a better illustration. It shows you a surface. Some of the data points are above the surface. बल्कि top को मैं above लिख देता हूँ so that it makes more sense. So these are above the surface and these are below the surface. The idea here is that if we look at the features, when we have the feature space, number of features, let's say these belong to a d-dimensional space. D का मतलब है अगर 2 फीचर्स हैं तो ये R2 हो जाएगा, अगर 10 फीचर्स हैं तो R10 हो जाएगा. Features belong to this and the decision boundary will be belonging to R D minus 1. This is a very important thing. Understand it very, very clearly. ये जो लेफ्ट पे डायग्राम है इसमें we have got 2 features. So if we have 2 features, the decision boundary will belong to R2 minus 1, which is equal to R1. अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है that what is the dimension of a dot? ज्योमेट्री आप लोग पढ़ के आए, एनालिटिकल ज्योमेट्री आप लोगों ने कच्ची से लेके मैट्रिक तक भी पढ़ी है, and then in colleges and then in the course in the first second semester. What is the dimension of a dot? Point या dot? जी हेलो. हाँ जी, नहीं बताना चाह रहे. आप लोग मौजूद तो हैं? आर यू लाइव? सर उसकी कोई लेंथ और विड्थ नहीं होती. तो व्हाट इज द डायमेंशन? सर 0 डायमेंशन होगी. Very good. So dot is dimension 0. When you have multiple dots, they form a line. So what is the dimension of a line? जल्दी से बता दें. सर उसकी तो विड्थ होगी ना, लाइन की लेंथ भी नो, होती है. देखिए यही कंफ्यूजन होती है. लाइन को जो हम ज्योमेट्री में जो लाइन है ना, दैट इज ओनली लेंथ. विड्थ उसकी जो है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज इट इज ए कलेक्शन ऑफ डॉट्स. बहुत ज्यादा डॉट्स इकट्ठे लग जाएं तो यू गेट ए लाइन, और वो हमेशा एक डायमेंशन में लगेंगे डॉट्स. देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज 1. और वो यहां हमें नजर आ रहा है. वी हैव गॉट 2 फीचर्स. द डिसीजन बाउंड्री is R1, which is a line. In the example on the right, we have got a 3D projection, 3-dimensional. We will have, let's suppose, 3 features. इसमें एक X feature, Y feature, Z feature. Then decision boundary
will be R3 minus 1, which is equal to R2. अब लाइंस जब मल्टीपल एक के साथ एक रखेंगे आप, you will get a surface. So R2 is a surface. Yes or no? Correct me if you do not understand it. हाँ जी, हेलो हेलो टेस्टिंग जी। नुमान अजमल, उस्मान अली, सलमान बदर, supposedly you're all present here. कोई जवाब दे दें Yes, sir. जी। उजैर। यस सर। और सरफेस का दूसरा नाम आपने प्लेन भी पढ़ा होगा। ये सही है कि नहीं? टू डायमेंशनल प्लेन होता है कि क्या होता है? So yes, sir. Okay, very good. So if we are talking about too many features, let's suppose we talk about जो है आपका थायराइड डेटा सेट दिया हुआ मैटलैब एग्जांपल, इट हैज गॉट 21 फीचर्स, देन decision boundary will belong to R20. अब ये 20 को ड्रॉ कैसे करना है? Therefore, the better name given to such decision boundaries is a hyperplane. ये याद रख लें, hyperplane is the boundary separating two half spaces. अब ये हाफ स्पेस और हाइपरप्लेन एफाइन आपने पढ़ा होगा, इट इज एन अफाइन प्लेस कि इस लाइन को अगर मैं आगे लेता जाऊं तो इट विल कीप ऑन गोइंग इन्फिनिटली और वो सारे डॉट्स इसी पे आएंगे, एंड इन द अदर डायरेक्शन एज वेल। ये जो प्लेन है आई कैन एक्सटेंड इट फर्दर एंड फर्दर जहां तक मैं इसको ले जाना चाहता हूं। देयर आर नो लिमिट्स, दिस इज द अफाइन स्पेस। हाइपरप्लेन डिवाइड्स the given data set into two half spaces. ये टेक्निकल टर्म है, ना भी आपको याद हो तो कोई बात नहीं है। Hyperplane will divide or split the data into classes. ये आप याद रख सकते हैं। So hyperplane splits the data points into separate classes. Yes or no? कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन? ओके, नो सर। नो कंफ्यूजन। ये जो डायग्राम है, द वन आई हैव शोन हेयर, इसमें जो ये बने हुए हैं, दीज आर नॉट एक्चुअली दी सपोर्ट वेक्टर्स। अभी तक हम कह नहीं सकते इनको सपोर्ट वेक्टर्स, बिकॉज यू नीड टू हैव समथिंग एल्स विच विल कंप्लीट द डेफिनेशन, बट इन्होंने बना दिए तो अभी आप समझ लें दीज आर द सपोर्ट वेक्टर्स। वजह क्या है वी विल सी इन ए short while. So this is your SVM section A. Let me just save it. So hyperplane splits the data points into separate classes. Classes हमेशा जो है एक नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव। ऊपर वाले को नेगेटिव कह दें, पॉजिटिव कह दें, नीचे वाले को कह दें, इट इज जस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। अब आप मुझे एक क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे दैट व्हाट इज मेंट बाय द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स।
अगर हमारे पास एक वेक्टर है, let's suppose we have a vector like this and another vector like this. एक को हम कह देते हैं वेक्टर ए, इसको कह देते हैं बी. What will be AB? हाँ जी, सर ये जो पॉइंट मिला है हमें, यहाँ पे भी कोई वेक्टर ड्रॉ होगा? इधर सर ये और बी वेक्टर्स जो हैं जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं, यहाँ नहीं नहीं कुछ नहीं ड्रॉ ना, ये तो वैसे मैंने खाली जगह पूरी की है. चलें, let us stop here. We will we will continue discussing the support vector machines. थोड़ा सा अपना वेक्टर की जो है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, प्रोजेक्शन, ये चीजें जो है ना जरा थोड़ी सी करके आए. और इनके बीच में एक एंगल आता है जिसको थीटा कहते हैं. तो ये थीटा जो है, दिस इज नॉट द थीटा which is used in neural networks by एंड्रयू एनजी. वो थीटा और है, ये थीटा एंगल है. दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. तो थोड़े से जो है एम, एक्स, बी, वाई, थीटा, ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी इसमें जो है you will have to be careful because it will be slightly different from the other concepts that we have studied. I'll try to clarify it wherever I can, but if you still get confused, then make sure you revise it. Okay ji, thank you very much for the lecture, and you already got the grading of your fabulous performance. Now we shall meet on Monday, or hopefully